everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. Guys, if you are also preparing for the higher education department as an assistant professor in Jammu and Kashmir, this video is going to be very helpful and very informative for all of you. We are going to discuss about the history of Jammu and Kashmir, administrative structure and number of things about Jammu and Kashmir basically. Also, the very important part, that is your HR question. Number of HR question we are going to discuss in different domains and subdomains. Let's just discuss it out about a Jammu and Kashmir and various HR question which is going to be help you to showcase your confidence level, your communication level and your personality and your knowledge about your place and about your field. Let's just discuss it out. So this is basically introduction, or you can say it out, history of Jammu and Kashmir, as it is known as the Union Territory basically. It's Union Territory, Jammu and Kashmir, and it's known for its beautiful landscapes which is known as, it's crown of India, right? So there are number of neighbor states also along with the boundaries of Jammu and Kashmir, that is Punjab, Himachal Pradesh and some international boundaries, that is Pakistan and China. You must aware about this information as they can ask you that who are the neighbor states along with the Jammu and Kashmir. Very important part. You need to aware about the Reorganization Act of 2019 related to Jammu and Kashmir and Article 370 in a very detailed manner, right? Also, it's basically now that transition from a state to union territory. So you must aware about that now it's not a state, it's a union territory basically under the government of Lieutenant Governor, right? These are some composition and Speaker of Jammu and Kashmir also given, right? Executive branch Lieutenant Governor is Manoj Sinha of Jammu and Kashmir. These are some Council of Ministers. See, from whichever constituency you belongs in Jammu and Kashmir, you must aware about the MLA, your Deputy Chief Minister or your Cabinet Minister from your place, right? I won't say that you need to be memorized it, but yes, you must aware about that who is your Cabinet Minister related to your place, or who is your Deputy Chief Minister, like that, right? Also, you can also have a look to the department as well. Coming to the administrative structure, now Jammu and Kashmir both are headed by the Ladakh High Court, okay? And basically local governance is for the structure through District Development Center and local administrative affair. So this is something like that, Lieutenant Governor, Chief Minister or Council of Ministers, right? These are some hierarchy. Also, you need to be read it out in a very good manner as these are giving in a very highlighting point. So you can just read it out related to that. Coming towards the HR question. See, these are some general HR questions related to Jammu and Kashmir. So some are important HR questions you can see on screen, as what is the significance of Article 370? What do you know about Article 370? What are the challenges faced by Jammu and Kashmir before Reorganization Act of 2019? You must aware about, right? And what do you say about the culture and diversity, religious diversity of Jammu and Kashmir? Rights in Jammu and Kashmir, property rights under Article 35A, okay? And how do you elaborate on the role of Jammu and Kashmir Constitution? You need to be aware, do they have a separate constitution or like that, right? Economic activities, major economic activities in Jammu and Kashmir became a union territory. Special status influence tourism in region एंड झेलम रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके और आपके एजुकेशनल के बैकग्राउंड के बारे में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दैट, ठीक है? हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड वर्कलोड, लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है आपकी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको क्या मोटिवेट करता है टू परस्यू अ करियर इन अकेडमिया, राइट? एंड बैलेंस रिसर्च एंड टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट स्टेप्स यू विल टेक टू एंश्योर इंक्लूसिविटी इन योर क्लास, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे टू प्लान एकेडमिक ग्रोथ ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एंड व्हाई शुड वी हायर यू basically, right? These are some general HR question you have to look after that. Now JKPSC, Jammu Kashmir Public Service Commission से related कुछ important HR question, that is क्या role है, what is the role of JKPSC in administration, ठीक है? Functioning of JKPSC you should aware, major exam conducted by, eligibility criteria क्या है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्यूरोक्रेसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट? नो, दीज आर सम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यू नीड टू बी अवेयर, राइट? एंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में का क्या स्ट्रक्चर है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है? रिजर्वेशन पॉलिसी इन JKPSC रिक्रूटमेंट,
JKPSC कंट्रीब्यूट कैसे कर रही है एडमिन स्ट्रक्चर में, चैलेंजेस क्या हैं अंडर द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चैलेंजेस क्या हैं, दैट यू मस्ट अवेयर अबाउट, राइट। करंट सिनेरियो के साथ क्या रिफॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस किए हैं एज फॉर द JKPSC पोस्ट द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज एन यूनियन टेरिटरी, राइट। Also specific question information technology if you are going to be from this field basically, ये आपके IT field के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या है और इम्पैक्ट क्या है उसका एजुकेशन पे, कंसेप्ट ऑफ बिग डाटा और उसका सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च एंड एकेडमिया पे, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप क्या जानते हो एंड हाउ गोइंग टू बी एड्रेस दैट, क्लाउड कंप्यूटिंग इन मॉडर्न एजुकेशन, encourage students to develop coding and programming skills, importance of database management, right, and key challenges क्या है to teaching information technology and how do you address them, right, and students को आप कैसे गाइड करोगे IT रिलेटेड प्रोजेक्ट और रिसर्च को डेवलप करने में, स्ट्रैटेजीज को कौन कौन से को आप ओन करोगे IT लेक्चर्स को इंगेज और इंटरेक्टिव बनाने में, राइट। Mathematics. Yes, if you are going to be a assistant professor of mathematics, so you must aware about the concept of mathematics. Number of questions that can be asked you basically related to your field. Mathematics से related कुछ specific HR questions हैं, जैसे कि real world में equations, differential equations कैसे applicable हैं, ठीक है। Abstract mathematical aspects को, concept को आप कैसे relate करोगे students के, right? Importance of linear algebra in modern technology like machine learning and teaching techniques को आप कैसे innovative बनाओगे to use to reach calculus, ठीक है। Integrate software tools such as MATLAB और Mathematica into your teaching. Probability and statistics का क्या significance होता है, that is to measure central tendency, right, to find the probability of outcoming, you know, that some happening or outcoming of a thing basically. Strategies क्या करोगे आप to help student develop problem solving skills, because what happens, students used to be fair about the mathematics that I don't want to study maths or like that, you know, there are a number of different concepts, but as a teacher, as an assistant professor, what is your going to be, you know, contribution in that? Yeah, yes, that pedagogical skills some of there, that evaluating student performance को और different kind of teaching style को आप कैसे cater करोगे to diverse student needs, सब्जेक्ट नॉलेज को अप टू डेट कैसे रखोगे, लेट्स सपोज यू आर फ्रॉम IT or फ्रॉम मैथमेटिक्स, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द करंट थिंग्स विच इज हैपनिंग इन योर फील्ड, ठीक है। इंटरैक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को आप कैसे क्रिएट करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग को मतलब स्टूडेंट्स में कैसे इंकरेज करोगे, एकेडमिक डिसऑनेस्टी इन योर क्लासरूम, हाउ वुड यू हैंडल, रिसर्च ओरिएंटेशन, you need to be discuss about your research interest, ठीक है, how they align with the department of objectives, आप सिक्योर फंडिंग को कैसे प्लान करोगे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं आप फेस कर सकते हो एकेडमिक रिसर्च में, आप कैसे ओवरकम करोगे, राइट। हाउ डू लाइक क्या स्ट्रैटेजीज आप वो करोगे, ओन करोगे टू यूज योर पब्लिश योर रिसर्च इन डेप्टेड जर्नल्स, दैट रिसर्च एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को आप कैसे इंश्योर करोगे, how do you prioritize the research activities alongside teaching, and what is your view on collaborative research along with the teaching and research, how you're going to be deal with, these are some important HR questions. Communication skills competency, explain complex concept in IT and mathematics to student, right, when you had to communicate a difficult message to student or colleague, how do you handle it, methods to encourage student participation, how do you ensure lectures are engaging and interactive, example when your written communication contribute to success of a project and research paper, right. mathematical theorem को आप एक complex mathematical theorem को कैसे explain करोगे non technical audience को, ठीक है, and these are some important HR question related to this research orientation like that, कि written assessment और feedback को of student को कैसे आप approach करोगे, communication style को, different communication style को आप कैसे adapt करोगे by addressing the students, different culture and academia. Leadership and mentorship competency, you should be aware about the leadership and mentorship, what is the difference between the two, what are the key features of the two, what are the key factors included in both of them skills, right. Some of the students used to say my strength is leadership, it's a very heavy word, you must aware about that how you're going to be define that, right, what are the qualities of a great leader. Similarly here,
हाउ डू मेंटर टू स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ रिसर्च करियर इन मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, आप प्रोजेक्ट और रिसर्च को कैसे रिसर्च टीम को कैसे हैंडल करोगे, एंड फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग कलीग्स इन स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट, हाउ डू यू गोइंग टू बी डू दैट. Encourage student to pursue interdisciplinary research and handle situation where students not meeting expected standard of your. Contribute, how are you going to be contribute to the academic leadership of growth of your basically department of your field, right? That you need to be work out on that. What do you think mentorship role play, like एक mentorship जो है, what a mentor plays, you know, what kind of role a mentor plays in a student life, or what do you understand by mentorship, that you need to be prepared. So these are some important highlighting HR question. Problem solving, significant challenge in research and teaching, right? All the HR question have been given to you related to problem solving. How do you face the complex mathematical or technical problem. ठीक है, कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग का जो ब्रेक थ्रू रिसर्च और क्लासरूम में आप काफ़ी वो रही हो. ठीक है, स्टूडेंट्स को कैसे इनकरेज करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कोर्स को परस्यू करने के लिए. जैसे आईटी में बच्चे ज़्यादा जाते हैं, मैथमेटिक्स में इतने नहीं होते हैं. ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग को हाउ डू यू हैंडल, और डिसएग्रीमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग को. ठीक है, स्टूडेंट को क्रिटिकली और कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व इंडिपेंडेंटली कैसे करवाओगे उनको. How do you integrate problem solving exercise into your teaching method, right? Innovation and creativity competency. Teaching methods को how do you make innovative, engaging, interactive, right, and responsive. Some students are not responsive, they are not participating. Then how you make classroom interactive, that is very very important, right? Yeah, these are some HR question related to the same. Time management organization, how do you prioritize your task under the pressure as well when you have the strict deadlines, how do you complete that, how you complete your lectures, these kinds of questions can ask you. Okay, organize your research work, strategies to use to stay organized while handling a heavy course, ensure that students receive timely feedback on assignments, how do you going to be do that, and what the role does planning and organization play in your classroom management. Okay, कमिटमेंट टू कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. आप कॉन्टिन्यूस लर्निंग को एंड यू हैव टू बी इम्प्रूव योर स्किल्स एज वेल. लेट्स सपोज यू गॉट selected as an assistant professor, then how you going to be update yourself related to your field, related to your subject. Also how you're going to be ensure the professional development of yourself. Like एक stage आता है when you going to be that's enough, I have got what I want. But no, there is no stage of learning. In every age you can learn something. Specifically if you become assistant professor, you have number of scopes are there to learn different kind of things. So how are you going to be ensure that ये answers आपको बहुत अच्छे से prepare करना है, right? वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस में कैसे पार्टिसिपेट करोगे, सेमिनार्स में. ठीक है, इनकॉर्पोरेट फीडबैक कलीग से या स्टूडेंट से आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन प्रोसेस जम्मू एंड कश्मीर का कैसे डिफरेंट है अदर स्टेट से. ठीक है, डेलिमिनेशन कमीशन रोल का क्या रोल है इसमें, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसके इलेक्शन कंडक्ट करने में. सिग्निफिकेंस क्या है DDC, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल. ऑल राइट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट. आपको ये चेकआउट करना है कि जम्मू एंड कश्मीर में उसका क्या रेलेवेंस है. ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल क्या है. ठीक है, एंड करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, दैट इज मनोज सिन्हा, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. इम्प्रूव्ड गवर्नेंस अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. ठीक है, वो गवर्नमेंट का क्या रोल है टूरिज्म को बूस्ट करने में जम्मू एंड कश्मीर में. डिजिटल गवर्नेंस के क्या इनिशिएटिव हैं, राइट. and some of the important question like how they are going to be oversee the education sector in Jammu and Kashmir. List of ministry in Jammu and Kashmir government, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री डिप्टी कमिश्नर से हमने अभी जो भी टेबल चेकआउट की थी वो आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा. ठीक है, या लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपरली हाईलाइट किया गया है इन द रेड मार्क, राइट. 95 members are there, 90 are the members of legislative assembly, or 5 as appointed members, something kind of.
ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज लद्दाख हाई कोर्ट इज हेडिंग ओवर द जम्मू एंड कश्मीर बोथ, ठीक है। रेस्ट द रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। दैट या हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन सा क्या मिनिस्टर है, दैट यू नीड टू बी अवेयर। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का क्या रोल है इन लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल कमिश्नर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। सो ई गवर्नेंस में को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। सो दीज आर सम HR क्वेश्चंस बेसिकली, right, related to Jammu and Kashmir. So we have covered a vast area related to Jammu and Kashmir history, introduction, administrative structure, legislative structure, and various HR questions. This document is going to be enough if you are reading it, if you are studying it, and rest is your practice with your peer mentors. Because reading is just not only going to be work. After reading it, after understanding this documentation, you also need to be prepared with the different mentors of your peer for your HR round, right. Also you need to be make your basic and advanced level core knowledge of your field related to mathematics and in IT for whatever post you are going for as an assistant professor, right. Please collect all the information related to Jammu and Kashmir, as all the information in the red highlight has been given in this particular documentation. Do not forget to download this documentation from your PDF panel, prepare it well, and practice at least number of I would say HR round with the Yopedia mentors. All the very best, prepare well.